friends, colleagues and teachers. Hope that you all will be fine. So dear student, इस शॉर्ट वीडियो में हम आज बात करेंगे और एक एजुकेशनल थिंकर फिलासफर की जो एक ज़बरदस्त फेमस एजुकेशनिस्ट था फ्रेडरिच ऑगस्ट फ्रोबेल। तो आज हम इसका कंटेंट भी आपके सामने रखेंगे ताकि जो भी जिन बच्चों का भी सिलेबस में इसका रिलेटेड है तो वो इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है फ्रेडरिच ऑगस्ट फ्रोबेल जो जर्मनी से था, उसने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में किया। आप इसका पहले वीडियो भी फ़ोटो भी देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है फ्रेडरिच ऑगस्ट फ्रोबेल जो जर्मनी से था, इसने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। उसमें प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, फॉर इट अलोन इज़ द फ्री फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ इन द चाइल्ड सोल। तो प्ले जो है ये फ्रोबेल बोल रहा है, ये कोटेशन उसी की है। प्ले इज़ द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, फॉर इट अलोन इज़ फ्री फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इज़ इन द चाइल्ड सोल। Children are like tiny flowers, they are varied and need care, but each is beautiful alone and glorious when is seen in the community of years। तो ये फ्रेडरिक फ्रोबेल का बोला हुआ कोटेशन है, आप इसको देख सकते हो। तो ये भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। इस तरह हम दूसरे स्लाइड में जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। वो ये है फ्रेडरिच ऑगस्ट फ्रोबेल, इसकी जो डेट है, बर्थ डेट और डेथ, वो दोनों दिखाई गई है स्लाइड पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। फ्रोबेल ऑन 21 अप्रैल, ये है इसका साउथ जर्मनी से है। ही वाज अ जर्मन पेडागोजी। ही फ्रोबेल वाज अ मदरलेस चाइल्ड losing his mother before the age of 1, studies mathematics science at the University of Jena, study of the Johann Friedrich Astrology। इसके बाद है taught and progressive model school in the Franklin that was advocated the Swiss educator John। तो ये है astrology opened his own school। तो मैंने आपको ये बोला है कंटिन्यूसली, इसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रोबेल के। He also included mothers in the school, which was the start of the PTA we see now। then they were called the school mothers। तो ये स्लाइड भी आपके लिए है, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, अपने कॉपी पे लिख सकते हो। इसके बाद है जैसे his work, Froebel went on to spread the word about his kindergarten। He wrote many books about the philosophy। These include The Education of Man, The Pedagogy of Kindergarten, The Education by Development and Mother Play। ये उसके फेमस कुछ बुक्स है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये भी लिख सकते हो। उसकी जो एजुकेशनल फिलासफी है ऑफ यूनिटी, वो ज़बरदस्त है। कम लेट अस लिव फॉर आवर चिल्ड्रन, ये उसी का स्लोगन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द यूनिटी बिटवीन द सुपर एंड नेचर। ही इन्फ्लुएंस्ड बाय द Schelling pathetic philosophy of the identity of mind and nature, God as the absolute power include all parts of nature। Man was part of the God and God was part of the man। He admired the appearance of divine spirit in all things growing, all things have common from the divine unity। Unity is God। Mental life was all to or outgrowth of the insane creativeness of the divine। It helps man to understand his own nature। तो डियर स्टूडेंट से इम्पॉर्टेंट है, इस वाले कंसेप्ट को भी अपने आप कॉपी पे लिख सकते हो और ड्रिल कर सकते हो। एजुकेशनल व्यूज ऑफ फ्रोबेल जो है, he was an absolute idealist and his ideas about education was related to the concept of the religion and God। According to Froebel, the real purpose of education is to expand that life of an individual until it comprehends the actions through the participation in all prevailing spiritual activity। To him, education is a stage in the evolution of the child। Education helps us to evaluate childhood to a higher level and to be a useful member of the society। He introduces new method of teaching related to the interest and inborn tendency of children with emphasis natural development through self activities and experiences। तो ढेर स्टूडेंट ये उसी का कंसेप्ट था, आप देख सकते हो इस बोर्ड पे। उसके बाद फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैन आर क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम। फ्रीडम implies the ability to make wise choices and to avoid evil। goodness जो है is alone is real according to the Froebel, for evil is merely partially and distortion of goodness। Man is naturally creative। This is an expression of his basic nature। The child is not evil। तो ये child is most reflective, child's own individuality, self activity is creative according to Froebel। if we are करें तो ये भी उसी का है, आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यूसली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने कार्य में लिख सकते हो। उसके बाद है जो फ्रोबेल का है एजुकेशन थ्रू फैमिली एंड मॉरल्स। तो ये उसी ने दिया है एजुकेशन थ्रू फैमिली एंड मॉरल्स। एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन द यूनिटी ऑफ द फैमिली। तो ये भी उसी का है। व्हेन द होम फेल्ड इन रिस्पांसिबिलिटी द एजुकेटर हैड टू स्टडी। तो ये है, आप देख सकते हो इस वाली स्लाइड को। इसमें फ्रोबेल ऑन मेंटल डेवलपमेंट, उसने मेंटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया है। मेंटल ग्रोथ इज़ ऑर्गेनिक लाइफ प्लांट द एक्टिविटी ऑफ थिंग्स ओनली। तो ये है उसने नोइंग फीलिंग एंड विलिंग ईच ह्यूमन बीइंग मस्ट डेवलप फ्रॉम विद इन ऑफ। तो ये है उसी का कंसेप्ट, आप इसको भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। The play of the children is not recreation, it means earnest work। Play is the purest intellectual production of the human being in this stage, or the whole man is visible in them, in his finest capacities, in his innermost being।
idealist है जो Froebel built his concept of kindergarten upon idealistic principles such as all actions originates in innate and good. Human possesses an inherent spiritual essence that is thereby vitalizing life forces that cause development. All beings and ideas are interconnected parts of the. तो ये भी है उसी का जो है आप देख सकते हो आइडियलिस्ट था. Froebel's educational ideas में है सारा ये. The whole universe is simply a unity. It demonstrates unity of substance, unity of origin, unity of purpose. There is one eternal law. There is one eternal law, the law of unity that governs all things, man and nature. Education is a growth from within. Everyone develops according to some universal laws. Education is developed by which an individual realizes that he is one unit of the all encompassing unity. Development is possible only through activity in paradise. Education for cultivation of senses, especially hearing and vision. Education means the cultivation of the awareness, love and independence. तो ये भी इसमें है important point. The purpose of education is to unfold the child's innate powers and awaken his spiritual nature so that they may have a spiritual union with God. There is a similarity between the growth of the plant and that of the child. Play is the highest expression of human development. In the childhood, father alone is free from expression of what is in the child's soul. Play is the spontaneous activity of the child. Therefore, it is later test for their education. Self-activity is the greatest teacher. The teacher is only a guide. He should have a full sympathy for the child. तो ये भी उसी का है important point. उसमें है जैसे principles है recognition of the uniqueness of each child's capacity and potential, the holistic way of each child's development, recognition of the importance of the play, इसी तरह से ये ecological view of humankind in the natural world, recognition of the integrity of the child, recognition of the child as a part of the family. ये भी उसी का important कुछ points है. उसमें environment पे इसने ज़्यादा जोर दिया है. Physically safe but intellectually challenging, promoting curiosity, inquiry, sensory stimulation and aesthetic awareness, demonstrating the unity of the indoors and outdoors of the natural and cultural, allow free access to the rich range of materials that promote open mind and posture. तो ये भी है उसी का आप देख सकते हो dear students. उसमें है और kindergarten का उसने जो ज़बरदस्त है ये सारा इसमें मटेरियल है आप देख सकते हो और अपनी कॉपी पे लिख सकते हो dear student. kindergarten का और kindergarten का ये सारा है उसमें ये जैसे ये वाला स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी आप देख सकते हो. फिर हम जाएंगे इस वाले स्लाइड में Froebel's kindergarten constructed 1892 ये डेट है ये देख सकते हो. Froebel's kindergarten गोल जो था वो ये है आप देख सकते हो इसको अपनी कॉपी पे लिख सकते हो. फिर है ये है ये उसी का है सेल्फ एक्टिविटी जो मैंने आपको बोला ये आप लिख सकते हो. इसके बाद ये वाला स्लाइड लर्निंग बाय प्लेइंग एंड सॉन्ग्स गिफ्ट द रोल ऑफ ए टीचर ये भी इम्पोर्टेंट है. फिर ये वाला है इम्पोर्टेंट. फिर ये वाला है इम्पोर्टेंट. ये वाला है इम्पोर्टेंट. ये वाला है इम्पोर्टेंट. ये वाला जो इम्पोर्टेंट है Froebel का ये इम्पोर्टेंट है. क्या बोलना हुआ है